guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is Natasha and today I'm going to share with you Nykaa haul. Yes, I am so excited to show you guys what I got from Nykaa. I love shopping and I'm sure you guys also love shopping. So yeah, I've already unpacked everything and saw all the products. And let me tell you just a small information. This video is not sponsored at all. I bought these products with my money. So yes, this is not a sponsored video as my channel is very new to YouTube. So yes, this is not a sponsored video. So before starting, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Natasha Almeida. And also my favorite line, without wasting any time, let's get started. So this is 1, 2 and the third box and lots more to show you. So Nykaa के पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर आते हैं. इस तरीके के हर एक प्रोडक्ट जो है बबल रैप होकर आते हैं. सो टूटे फूटे ना. सो नायका का पैकेजिंग इज वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स नाउ. So the first product that I bought from Nykaa is this one. It is a Maybelline Fit Me foundation. As you can see, this is the foundation and it is normal to oily skin. It comes in 30 ml. So and the best part of this is the pump. It comes with a pump. पहले तो pump नहीं आता था. So बहुत सारा complain आते थे कि बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए दे हैव गिवन पम्प. सो ये अच्छी बात है. आई हैव यूज दिस फाउंडेशन. एज यू कैन सी आई फिनिश्ड अ ट्यूब ओवर हियर, so that you know, to check whether it suits my skin tone or no. It did suit, so I bought another one. So yeah, this is the product and it is in the shade 220 natural beige. As you can see the foundation, I've applied it on my face and I love this foundation very much. So yeah, if you want a full review of this foundation, please do let me know in the comment section. And this I'll show you. This is the shade. As you can see, this is a shade. It absorbs in the skin. As you can see, it got blended well in the skin. So yeah, so the foundation is 549 rupees, as you can see. So yeah, this is the price of the foundation. And the next product is this hair care product. I bought this shampoo and conditioner, L'Oreal Paris Extraordinary Clay Purifying and Hydrating Shampoo, and this is a conditioner. Anti-oiliness and purify scalp, oily scalp and hair. As you can see, my scalp is very oily, so my hair also gets very oily, so I wanted a shampoo which treats it. So yeah, this is a shampoo and conditioner. If you want a review of this, do let me know in the comment section, as I will be using this for the first time. So it says that it washes off excess oil on scalp and roots, helps eliminate impurities and pollution particles. So yeah, it costs rupees 282 the shampoo and the MRP is 185, but I got this of 167 rupees. So yeah, and look at the color, guys. It's so pretty. It's so refreshing color. I'm looking forward to use this shampoo and conditioner, and it's matching my nail polish. So yes, this was the second product. Now let me show you the next product. Is my favorite product. It is a Color Bar Mesmerize Kajal. As you can see, this kajal, and it is waterproof. It is smudge proof. And let me tell you guys, I am using this kajal since more than 3 years. As you can see, I have applied this kajal and it is as it is. It is dark and it is also mineral oil, preservative and paraffin free. So that is a very good thing. It glides very smoothly on you. This does not spread at all. ये बिल्कुल spread नहीं करता. आपको ये काजल ज़रूर try करना चाहिए because I love it. As you can see, I've almost used this. बहुत सारा मैंने इस्तेमाल किया है just to show you guys. And इसका मैं आपको बता रही हूँ इसका कितना अच्छा काजल है. See, it's so dark, as you can see. मैंने बहुत सारा काजल्स ट्राई किया है, बट दिस इज
the best kajal I've ever used. So do try this kajal. बहुत सारा काजल्स जो है वो फैल जाते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं फैलता. सो गिव इट अ ट्राई. इसका MRP जो है वो 299 का है, बट आई गॉट दिस 224 रुपीज. नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नायका हॉल है और लिपस्टिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता. तो यस, आई गॉट दिस Maybelline New York Sensational Liquid Matte Lipstick. As you can see, this is matte, and let me tell it. This is the product I've already opened. This is the shade that I've applied. It's a wonderful orangey red color shade. As you can see, I'll show you the swatch. It is not very heavy on your lips. It is very lightweight, and I kind of like the formula. So as you can see, this is the shade. So it is a very nice shade. I like this shade, and it is in the shade To the Fullest. Yes, Maybelline To the Fullest. This is the shade. And I got a free gift from Nykaa along with this lipstick. It is this, the Creamy Matte by Color Sensational. I got this free gift from Nykaa. So thank you, Nykaa. And the shade is 633 Firecracker Red. It is a firecracker red. As you can see, I will open it and show. Swatch it. This is how it looks like, the shade. And this one is the shade, this one. As you can see, a pretty shade. So yeah, this was a free gift. गिफ्ट मिलता है तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है. So yes, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई. And I bought this lipstick of 349 rupees. I will mention somewhere on the screen. So yeah, this is the next product. Now let me show you the next product. The next product is a blusher from the brand Swiss Beauty. A professional blusher. As you can see, it comes in a very cute packaging, silver. So yeah, it is in the shade 06 Lovely Pink, and its net weight is 6 gram. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हाइलाइटर. मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई करके देखा है. एज यू कैन सी, बहुत ही पीची पिंक और गोल्डन शेड है इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इसका इनर पैकेजिंग मैं आपको बता रही हूँ. इस तरीके का दिखता है. स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल ब्लशर इन प्लास्टिक की पैकेजिंग. एंड ऑल्सो आई बॉट दिस ऑफ 249 रुपीज. सो येस, आई विल शो यू द स्वॉच. एज यू कैन सी, दिस इज द शेड. It has golden particles in it. It is peachy pink. I kind of like this blusher very much. So let me show you the swatch. As you can see, this is the swatch. I don't know if you can see or no. It is a wonderful peachy pink shade. So yes, this is the next product. This is very affordable, and also you can use this blusher as a highlighter as well. So yes, you can buy this product क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हमेशा अफोर्डेबल प्राइजेस में होते हैं, एंड ऑल्सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी अफोर्डेबल ब्लशर, सो यू कैन ट्राई दिस. सो या, मैंने ऑल्सो हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का रिव्यू एंड डेमो किया है. सो मैं कहीं आई बटन में दे दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो का लिंक, तो आप देख सकते हो. सो या, दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. इट इज a Nykaa nail enamel. So this is the shade. It's such a pretty shade, guys. It is in the shade Mint Mandarin 65. As you can see, it's written Mint Mandarin 65. And I have applied this shade on my nails. Absolutely love this color, guys. It is a bluish greenish pastel color. So yeah, and I bought this of let me tell you the price, 161 rupees. So yeah, I love this. Absolutely love this shade. Now the next product is this one.
I bought this Pond's BB cream which is in the shade 01 original. और एक शेड आता है वो 02 medium आता है, 1 original and 02 medium. So my shade is 01 original. I love this a lot. आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस. जब भी मुझे फाउंडेशन लगाने का मन नहीं करता तो ये एवरीडे पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं इसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रही हूँ. सो ये बीबी क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. यू डोंट इवन स्वेट व्हेन यू अप्लाई दिस बीबी क्रीम. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है ये. लेट मी शो यू द इनर पैकेजिंग हाउ इट इज. इट कम्स विद दिस कैप एंड ये पंप है यहाँ पे. As you can see, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. It is instant spot coverage and natural glow. It definitely gives you a natural glow to your face. So give it a try once at least, this BB cream. This is also the BB cream I am using for a very long time, and this is the best BB cream, I think, Pond's BB cream. So yeah, this is the next product. MRP is 410, but I got this of 369 rupees. So yes, it is 50 gram, as you can see. So yes. Now let me show you the next product. The next product is this Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette. As you can see, it is in this packaging and it is in the shade 06. As you can see, 06. It is a very versatile palette. So let me open and show it to you. And the net weight is 9 gram. So yes. So this is how it looks. इसका शेड नंबर पीछे दिया हुआ है. And it comes in 9 shades. जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही versatile palette है ये. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेरी एक्सपेंसिव आई शेडो पैलेट. सो येस, स्विस ब्यूटी जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में होते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. तो येस, यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी स्वॉच इट एंड शो यू. येस, सो एंड दिस शेड, and this shade. As you can see, I've swatched 2 shades, one this one and one this one. As you can see, it is quite pigmented, guys. I love this eyeshadow palette. So yeah, this was the next product. And let me tell you the price. The price is 229 rupees. It's very affordable. So yes. These 2 shades are shimmer shades, थोड़े से shimmery है, and the rest are matte. So yes. Now let's see the next product. The next product is again from the brand Swiss Beauty. So this is the Swiss Beauty concealer. As you can see, the packaging, Swiss Beauty liquid concealer. It covers the blemishes at one stroke. So let me show you the inner packaging. Yes, it is a net weight is a 5.6 gram. So this is how it looks like. मैंने ऑलरेडी इसे अप्लाई किया है. एज यू कैन सी, ये काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है. जितने भी, मुझे इतना तो डार्क सर्कल्स तो नहीं है, पर जितने भी डार्क स्पॉट्स है उसको कवर किया है टोटली. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस. ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर very affordable again concealer, so you can definitely go for this. I'll show you the swatch किस तरह का दिखता है. काफ़ी अच्छा, you know, wand ऐसा आता है. and let me see, as you can see, this is the shade. So yeah, it is in the shade 04 medium beige. 04 मीडियम बेज है ये इसका शेड. तो या ये इट गेट्स ब्लेंडेड वेल इन द स्किन. इट इज बिल्डेबल ऑल्सो. कवरेज भी अच्छा देता है. सो येस, इफ यू वांट अ टोटल रिव्यू एंड डेमो ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो येस, इट इज नाइस एंड
very affordable concealer. So yes, you can definitely go for this. Now the next product is eyeliner, that is a Blue Heaven eyeliner. It is waterproof. I'll be using this product for the first time. I thought let me bring black and green colors. So this is how it looks like. This is 50 rupees each. So yes, let me show you how it is inside. This is the green one. And this is the black one, as you can see. Now let me show you the swatches. So इस तरीके का दिखता है. ये वाला जो ग्रीन है ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लैक है, काफी डार्क कलर है. सो यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दीज आईलाइनर्स. सो या, now let me show you the next product. The next product is a Blue Heaven from the brand Blue Heaven. It's a primer. It is perfect makeup base, studio perfection, oil free and non greasy. It is oil free and non greasy, guys. I've used this product while before using my makeup. I applied this on my face. As you can see, this is a Blue Heaven primer and I really like this. I absolutely love it. Yes, it is very affordable. If you're looking for a very affordable primer, you can definitely go for this. So yeah, Blue Heaven primer, this how it looks like. So yeah, let me show you the product. As you can see, it is gel formula, gel जैसा है ये, और it quickly absorbs in the skin. It is non-sticky, it is non-greasy, it mattifies your face. So yeah, and this is silicone based primer. So yes, as you can see, पूरी तरीके से मेरे स्किन में absorb हुआ है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है. as you can see, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऑयली ग्रीसी नहीं लग रहा है, पूरा स्किन में अब्जॉर्ब हुआ है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी अफोर्डेबल प्राइमर, guys, go for this. It's a very good primer and I bought this of इसका जो MRP है वो 300 का है, पर मुझे मिला है 225 रुपीज में. So yes, it's a good primer. Now let me show you the next product. The next product is this Clean and Clear Blackhead Clearing Daily Scrub. As you can see, this is a scrub. I love this. ना जाने मैंने इसको कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मेरी मॉम को भी बहुत पसंद है, मेरी फ्रेंड्स को भी मैं ये रेकमेंड करती हूँ. क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये स्क्रब भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आपके छोटे छोटे पिंपल्स आ रखे हो तो ये 3 दिन में ही गायब कर देगा. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला. फॉर ब्लैक हेड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. आई रीड इट. विथ नेचुरल apple extract and pure rice technology, helps gently remove blackheads and prevents new ones from forming. ये पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ब्लैकहेड्स के लिए भी बहुत अच्छा है. सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस. एक बार ये स्क्रब ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो लेट मी टेल यू द प्राइस. 65 रुपीज ओनली एंड 40 ग्राम है इतना प्रोडक्ट. So yes, now let me show you last but not the least product, and this product is very very important guys, very very important आज के टाइम में. This is a Savlon disinfectant spray. As you can see, I bought this spray. Obviously it is 99.99 germ kill around home. It kills wide range of germs like viruses, bacteria, kills antibiotic resistant germs. So this is very important. As you all know, अभी का सिचुएशन देखे जो कोरोना सिचुएशन है, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैंड सैनिटाइजर्स एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट स्प्रे. एज यू नो, बहुत सारे पार्सल्स मेरे घर पे आते हैं तो आई नीड अ सैनिटाइजर. मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सो आई ऑर्डर दिस वन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन एनी अदर थिंग. सो अगर आपके घर में भी पार्सल्स आता हो या बाहर से कोई भी सामान आता हो, प्लीज़ डू सैनिटाइज इट. आई बॉट दिस ऑफ 159 रुपीज़. सो इट
comes in 170 gram. So yes, this is the product, and also you can use it everywhere guys, like tabletops and chair and sofa, doorknobs, kitchen sink, shower taps, toilet area, mattresses, car seats, curtains, carpets, and everywhere you can use this. So सबसे important product. So yeah guys, be safe, you take all the precautions and take care of yourself and take care of your family as well. So yeah, this was the last product. So ये था मेरा नायका haul. I hope you like it. So if you did like, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Natasha Almeida. सब्सक्राइब के बगैर जाना नहीं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना so that you get notified whenever I upload a new video. आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए, एंड कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. Till then, see you for my next video.